So today we are going to see the just summary of my syllabus, English literature, and there are two papers for my upcoming exam. First one is of 100 marks, whose syllabus was this uh, the first chapter, that is Roach on Habits, A.G. Gardiner, and a definition of gentleman of studies, forgetting the gift of Maggie. That these are the 30 stories. A work of art, a parrot in the cage, the doll's house, and the one novella that is a very short novel, uh, Animal Farm. So this is available in both 100 marks as well as 15 marks, 50 marks paper. So the chapter that are available all about dog, the last leaf, that was incredible. Eh, the alligator and jackal, uh, three strangers, and again Animal Farm. So what we are going to do uh, in this session, I will just um, uh, keep the summary. I will read the summary that I already searched on the ChatGPT, and now I'm going to explain. So these are the some just basic summary in just within 3 or 4 lines. So this this summary will not gonna be give a proper uh, idea about any chapter. So in the below chat, I have asked a longer summary and a better explanation of the each chapter. So we will start from there. So now we can start from here. So the first chapter is that is on habit as a gardener. So here is the simple explanation in the English for this chapter only, and summary and the explanation both are in English. But after this chapter, the explanation will be the in the Hindi and the summary will be the in English, completely English, because ultimately we have to write the examination in the English. That's why I kept my summary in the English and the explanation in Hindi, so that we can have a better understanding, a better idea about the chapter and the learnings of the chapter. So it is more easy to capture the ideas in our local language, that is Hindi. So that's why I have uh, kept it in the Hindi and just within some lines, not longer one. And the summary is also a little bit short, and the final third thing that we will mention about each chapter, key learnings from the each chapter. So we will going to discuss three things. The last thing that we will discuss about every chapter, key learning. Second, last, that is summary, and first thing that is explanation. So we will start from here. So on studies, on habits. So simple explanation. Gardiner explains that habits are formed slowly by repeating actions. At first, they are weak, but later they become strong and control our behavior. Good habit help us succeed and live disciplined lives, while bad habits
harm us and are difficult to remove. We compare habits to threads that turn into ropes over time. So we must careful about that what habit we develop because they shape our personality and future. And summary. Habits are formed by the repeating action gradually over time. At first, they are easy to control, but gradually they become strong and influence our behavior. Good habits make our life disciplined, organized, and successful, while bad habits can harm us, personality, and future. The author compares habit to threads that slowly become strong ropes. Once habits are formed, they are difficult to change. Therefore, we should be careful in developing good habits beginning, from the beginning. Our character and success depend on our habits. In simple words, habits shape our life. So we must choose them wisely and practice only positive action every day. Hmm, like this, shooting every day streaming or whatever you love. Uh, that is key learning from this chapter. Important points. Habits are created by repetition of the actions. Small habits become strong over time. Good habits gives you success and discipline. Bad habits जान देंगे आपको और struggle. Habits are hard to change once fixed. Character result of habits. Always build positive habits yearly. And better than this, I will say not only develop the positive habits, but I will say just develop yourself, develop your inner and your intellectual level. Than everything that is coming through you, not just habits, actions, words, but the every gesture, movement, or any uh, reflections that comes through you, that will be the genuine, if you will be the genuine. So you should try to focus on the first kind of primary thing to yourself, the self, uh, to reforming himself, not just habits. Habits are just outcomes of your inner world, your inner uh, 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 phase, you can say. Next chapter, that is uh, the definition of gentleman. Uh, that is written by Newman, gentleman Newman, J.H. Newman. The this is ऐसे इस ऐसे में न्यूमैन बताते हैं कि ट्रू जेंटलमैन कौन होता है। उस उनके अनुसार जेंटल जेंटलमैन वह नहीं जो अमीर ऊंचा उच्च वर्ग का हो, बल्कि वह जो अपने व्यवहार से दूसरों को सम्मान दे। मतलब एक चीज यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है, बातें बहुत व्यवहारिक लेवल पे चल रही है, बहुत बहुत सुपरफिशियल लेवल पे। दैट इज आई एम गेटिंग दिस ऑल द लिटरेरी वर्क and because this time I am reading the philosophical books, content, watching on uh, Acharya Prashant app, and also related philosopher and philosophical book through that, like Vedanta and many more, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, and Western philosophy too. So, on compared to those, these summary and these advices like व्यवहार से दूसरों को समझ, these are seems like very superficial. हम्म, बढ़िया, फिर भी एग्जाम देना है तो लिख पढ़ना पड़ेगा।
बस एग्जाम ही पर इसको पढ़ा जाएगा, बाकी सब हाँ। तो जो लोग सुने, एक अच्छी बात बता सकता हूँ, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है सेल्फ रिफॉर्मर प्रिंस, उस पर चलता है स्ट्रीमिंग बुक्स रीडिंग का भी। तो बहुत सारे बुक, जो नया नया कंटेंट हमारे पास आता है, रिफ्लेक्शंस भी होता है, जो डेली लर्निंग्स होता है, दैट इज बियॉन्ड बाय द एकेडमिक सिलेबस, उन सारी चीज़ों का मैं समरी लाता हूँ, मतलब समराइज्ड वर्जन। रिफ्लेक्शंस भी होता है, वीकली ऑब्जर्वेशन सेशंस भी होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं बढ़िया। अह, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता फिजिकल इमोशनली, वो जेंटलमैन है, हमेशा विनम्र और शांत रहता है। मतलब बहुत बहुत सुपरफिशियल बातें हो रही है। दूसरों की भावनाओं को समझता है, ठीक, बस अभिवाद भी सभ्य बनाए रखता है, विवाद में भी दूसरों को गलतियों को माफ करता है। ठीक है, बढ़िया है। अब वो अपने नॉलेज और पावर को दिखावा नहीं करता, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। असल में जेंटलमैन का असली पहचान उसका कैरेक्टर और बिहेवियर है, न कि उसका स्टेटस। कह सकते हो एक प्रकार से कैरेक्टर और बिहेवियर ये भी रिफ्लेक्ट होके आते हैं क्या, आपके इंटरनल वैल्यूज से, कि आप अपने अंदर किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं, और वही चीज आपका कैरेक्टर और बिहेवियर बन के आती है। तो ये एक स्टेप बाहर की बात हो रहा है, लेकिन पता लगाया जा सकता है कैरेक्टर और बिहेवियर को देकर कि वो बंदा कैसा है, वो इंसान कैसा है। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, द अल्टीमेट थिंग इज दैट इज योर इनर बीइंग। Summary. A gentleman is a person who behaves politely and never hurts others. According to the Newman, true gentleman is shown through kindness, respect, and self-control. A gentleman avoids causing pain, speaks softly, and considers the feeling of others. He remains calm in difficult situations and does not show anger or pride. He is helpful, honest, honest, and forgiving. He does not show off his knowledge or status. Instead, he uses his qualities wisely and respectfully. A gentleman treats everyone equally. That is fine thing. Uh, Whether rich or poor. In simple terms, a gentleman is known by his good character, manners, and the way he makes others feel comfortable and respected, but not at all. हाँ, ये लाइन भूल गया चैट जीपीटी लिखने को, या राइटर की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। जेंटलमैन इक्वल टू गुड बिहेवियर, नॉट सोशल स्टेटस। मतलब ठीक है, ये हो गया एक आने की बात, तो ये कहा जा रहा है दो आने की बात, जबकि 16 आने की बात भी इसमें लिखा जा सकता था, जो कि नहीं लिखा गया है चैप्टर में। रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। काइंडनेस, compassion, always consider others feelings, stay calm and polite in all situations, not arrogance, no arrogance or show off. Fine. Forgiveness and the patience are key qualities. True character is shown through action. That is the true line. True character is shown through the actions. Actions के द्वारा ही आप किसी के ट्रू कैरेक्टर को जान पहचान सकते हैं। कैसे मतलब, कैसे अंदर झांकने का तो कोई मशीन नहीं, इधर पर नहीं है, तो एक्शंस के द्वारा ही किसी को देखा या समझा जा सकता है। बट ये कहते हैं कि एक्शन ही वह व्यक्ति है, वह इंसान है, दैट इज नॉट द रियल थिंग। बिकॉज most of the time the action that we perform in the our external world
that are just that maybe or that can be uh, influenced by the any superficial or any imaginary or hypothetical thing or stories from the external world, and that is uh, inseeded um, in the internally as a and in a form of a greater values, so that can be reflected can be reflect in actions. So you can say that the action is the ultimate thing. We can say that the action is reflecting the inner estate or the inner values, but that inner values can be a form of assumptions through the just inhaling the assumptions and the beliefs from the external world. Hmm. But it is necessary that absorbing the action. Hmm. Because ultimately, if you are observing the actions, means you are seeing the uh, outcomes of the actions and the how they influence or what are the impacts of actions on you and the world. So by observing that action, this is the only one way to observing the action to reform yourself and to build a uh, better internal values within yourself. Mm. So it is a good thing just observing and seeing the actions. uh, chapter next, that is on studies Fran फ्रांशियन बैकन। इस ऐसे में बैकन बताते हैं कि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि पढ़ाई तीन काम करती है। पहला, डिलाइट आनंद, अकेले समय में पढ़ाई हमें खुशी देती है। बढ़िया। ऑर्नामेंट्स सजावट, बातचीत में नॉलेज हमें बेहतर बनाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भाषा मतलब सोचो भाषा कितनी अच्छी चीज है। अगर भाषा नहीं रहती तो हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बड़ा परेशान हो जाता है इंसान। एक पढ़ा था किताब बातचीत, मेरी बातचीत है ये पे, कहानी 12 में था। तो उसमें बताते हैं कि इंसान के पास अगर भाषा नहीं रहती, बोलने की शक्ति नहीं होती तो कैसा होता। क्वेश्चन भी एक तगड़ा था उस किताब के मतलब उस चैप्टर के अंदर में, अगर बोलने की शक्ति ना होती तो कैसा होता इंसान। हम हमेशा बेचैन, खलबली उसके अंदर। हाँ, जब तक इंसान किसी बात को बता ना दे, अपने इच्छाओं को, भावनाओं को, अपने अंदर के अनुभवों को, तब तक वो हमेशा बेचैन रहता है, खलबली मची रहती है, जैसा कुछ उफन रहा हो अंदर। जल्दी से उसको रिलीज करो। तो रिलीज करने के लिए भी चाहिए ना, वर्ड्स चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए, भाषा चाहिए, ग्रामर्स चाहिए, ताकि जो मैं अंदर महसूस कर रहा हूँ ठीक उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। अ, जो कि मैं करता हूँ कभी कभी समझ, मतलब यही लगता है कुछ चीजें भाषा से परे होती है, बहुत सारे फीलिंग्स जस्ट भाषा कह सकते हो। आपके द रियल फीलिंग जो आप दैट यू फील, उसके कुछ सिमिलर करीब करीब होते हैं, 10 टू होते हैं। हाँ, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। एबिलिटी योग्यता प्रैक्टिकल लाइफ में सही निर्णय लेने में मदद करता है, तीन चीजें करता है: डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ। बैंक बैकन बताते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग उपयोग है। जैसे मैथ दिमाग को शेप बनाता है, हिस्टोरी अनुभव सिखाता है, फिलोसफी हमें गहराई से सोचने में मदद करता है। ये बढ़िया चीज हमको तो मिल गया जी। हर सब्जेक्ट का अलग अलग उपयोग है। that can I use for the better research. Let's be an interesting thing in the rough notes.
Where is made of note? Yeah, you can share. So same like this. Tell me the importance of all major subjects. So there might be a spelling mistake, but you have to focus on the core things. Let's see. मैथ्स दिमाग को शार्प और लॉजिक बनाने में, साइंस दुनिया कैसे काम करती है ये समझने में. So you have to know about this also. Study the science, the different domain of the science. हिस्ट्री अतीत से सीख देता है. जियोग्राफी पृथ्वी और एनवायरनमेंट की जानकारी देता है. सो जियोग्राफी माइट बी अ साइंस ब्रांच. इकोनॉमी पैसा, विचार और रिसोर्सेज को समझना. पॉलिटिकल साइंस सरकार और अधिकारों की जानकारी देता है. कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी डिजिटल, ये तो सिंपल सिंपल बता रहा है. कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन को बेहतर बनाना, दैट इज लैंग्वेज. क्रिएटिविटी एंड इमोशंस को व्यक्त करने में मदद करता है. म्यूजिक एंड आर्ट. फिजिकल एजुकेशन शरीर को हेल्थी और फिट रखने में. हर सब्जेक्ट के बारे में खास कैसे कोई दिमाग कोई बेहतर आप चाहते हैं तो मैं बना सकता हूँ. नहीं जरूरत है, काफ़ी चलते हैं अपने कंटेंट. सो हम थे ऑन स्टडीज. जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करें because we have a bunch of chapters. सो मैथ्स क्या करता है? दिमाग को साफ बनाता है. हिस्ट्री अनुभव सिखाता है. फिलोसफी में गहराई से सोचने में मदद करता है. वही अभी कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है. डिस्कशन, डायलैक्टिक्स और राइटिंग भी जरूरी है, लिखना. अंत में उनका कहना है कि पढ़ाई हमें वाइज कंप्लीट पर्सन बनाती है. So summary, study are very important in human life. Francis Francine Bacon says that studies serve three main purposes: delight, ornament, and ability. They give pleasure in freedom, improve communication skill, and help in making correct decision. Different subjects develop different skills, such as mathematics sharpens the mind and the history provides knowledge of the past. However, studies should be the balanced with the practical experience. Too much reading without thinking is not useful. Discussion and writing are also necessary for the better understanding. Huh. In the simple words, studies make a person wise, knowledgeable, and capable, and they play a key role in shaping the successful and uh, thoughtful life. So I will also add one more thing that by by the influence of this line, discussing and writing are also necessary for the better understanding. So I will say about the understanding uh, that I have. Uh, there was a physicist, uh, Feynman, like he is also a Nobel laureate. So he says about the better understanding. Uh, just teach, explain the things, whatever you learn. Uh, just explain it. Um,
the method of explaining can be different. Like you can explain the things to on by writing on a paper, and like this just recording short summary videos, and by teaching himself to or teaching others the same thing, or try to make it simpler, huh? Just make the things uh, uh, convert the things, all the complex topics in just simple examples, relate that the simple examples, even those higher concept any 5 years or 10 years old children can even understood those things. So then you can say that I have uh, understood understand this concept completely. Hmm. So this is the good technique, and this thing is to a part of that, uh, whatever I am doing this time, just explaining one by one the summary of these all things. uh, Key learnings: studies gives knowledge, skill and wisdom. So fine, reading alone is not enough. Discussion writing is really discussion. Why discussion is important? Because sometimes uh, we don't acquire the actual learnings or the actual concept of the writer from the book. We mess up the our opinion, our own beliefs on the with the real concept. So when we go to make discussion with the others, uh, those all beliefs uh, uh, clear uh, with the real concept. So that's why the discussion is important. Otherwise, on the name of theories, on the or the real concept, you may acquire just or opinion or old beliefs. Huh. So that's why the discussion and writing is important. Writing too, because whenever you write the things, you have noted it forever. So you can recheck it again and again. And so you can check here also whether you have written the actual thing or the your just belief or opinion. So that's why discussion and writing is important. Different subjects develop different abilities. That's true. Study improves decision making power. Obviously, you have different ability, then you will have a power of uh, better decision making. Balance between theory and practical life importance. Uh, you have to not just know the things theoretically, and you have to also know about the what are their real life applications and the practical life examples. Overreading without thinking is useless, uh, because if you are not uh, just you are overreading, not ever thinking about these topics, so you are just scanning those things. You are not grabbing or uh, making the links with your memory, or you can, is what you can say, just you are not storing in your memory, your permanent memory. Uh, they will very soon erase from your memory if you are just over reading or just reading. So if you think about any subject that make a link with your previous concept, your previous thing that is or knowledge that is stored in your mind, so they make a linkage with those things. So that will keep your knowledge or information for a long lasting. Hmm. So that is also called the wisdom, to connecting the different things, linking the different things. Uh, that is very important in study. Education makes a person complete. Hmm. Because we are human beings and we have a super organ that is mind.
and it has a lot of qualities, a lot of abilities. So we are not using this powerful tool. We are just wasting or just uh, taking or producing a low productivity from that. Next chapter, that is forgetting, that is written by the Robert Land. So इस ऐसे में रॉबर्ट लैंड बताते हैं कि भूलना, फॉरगेटिंग एक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल एंड यूजफुल प्रोसेस है। हम रोज बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, नाम, जगह, छोटी बातें, और यह बिल्कुल सामान्य है। अगर हम हर चीज याद रखेंगे तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भरा हुआ, ओवरलोडेड हो जाएगा। लैंड हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ बताते हैं कि लोग अक्सर जरूरी चीजें भूल जाते हैं और बेकार चीजें याद रखते हैं। वह यह भी कहते हैं कि भूलना हमें नई चीजें सिखाने और आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए इंफॉर्मेशन को बहुत इन्फो इसलिए फॉरगेटिंग को बुरा नहीं समझना चाहिए। यह हमारे दिमाग का बैलेंस बनाए रखने का तरीका है। बढ़िया लगता है शामरी। Forgetting is a natural and common part of the human life. Uh, Robert Lend explains that people often forget many things, both important and unimportant. He uses humor to show how forgetting happens in a daily situations. According to him, forgetting is not always a weakness, but sometimes helpful. If we remember everything, our mind would become overloaded and confused. Forgetting allows us to focus on useful information and moves forward in life. It also helps us learn new things. In a simple word, forgetting is necessary for the mental balance, and it is normal human habit that should not be considered as a serious problem. Uh, Most of the time, we always uh, become serious about the I am forgetting these things, even sometimes important things or some generic things too. But this is a good quality. This is something like a virus remover uh, in your software. Suppose if this uh, firewall uh, that kills the your memory in your mind, what happens when the forgetting will not act in your mind? Even just minor or uh, m- miserable things that happens with you on the day-to-day life, you will always think about those, remember about those, and those thing will always uh, revolve around your mind or within your mind. So that is that will also influence you to or keeping you uh, far away from the those ideas, those things that are important to you. Hmm. So forgetting is a better thing, nice thing. And also one more thing that I can add here about the forgetting. Uh, what are the things that our mind tries to forget? So I said that in the previous thing on yesterday's chapter, the things that are not linked with the our previous concept within our mind. If we don't join it, our preloaded idea in your mind, that new concept will very soon erase. So it is better to uh, make a permanent storage of those things. Just link with the uh, older things or the pre-existing things in your mind. Next thing, key learnings from this chapter. Forgetting is natural, not weakness. Man needs balance everything.
याद रखना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमर shows real life situation of forgetting. Forgetting helps in learning new things and it reduces mental overload. Everyone forget, it is common human behavior. Focus should be on useful knowledge. Next chapter, gift of Maggie. ओ हेनरी। यह कहानी एक गरीब दंपति जिम एंड डेला की है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। डेला अपने सुंदर बाल बेच देती है ताकि जिम के लिए वो घड़ी का चैन खरीद सके। जिम अपना कीमती घड़ी बेच देता है ताकि वो डेला के लिए कम कंघी खरीद सके। जब वे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो पता चलता है कि दोनों के गिफ्ट अब बेकार हो गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि उनका सेक्रीफाइस और प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन स्टोरी है। ये जिम होता है, एक डेला होती है। तो क्रिसमस के मौके पर जिम जो है डेला को गिफ्ट देना चाहता है और डेला जिम को गिफ्ट देना चाहती है। दोनों पति पत्नी होते हैं। तो जिम क्या करता है, वो अपना चैन जो नहीं, घड़ी जो होती है बहुत दिनों से बिना चैन की पड़ी थी, उसमें लगाने वाला नहीं था। तो चैन के पड़ी थी तो क्या करता है कि उसको सोचता है कि क्रिसमस के मौके पर उसको बेच के मैं अपने पत्नी के लिए सुंदर बालों को झाड़ने के लिए क्या लाऊंगा, कंघी लाऊंगा, कॉम्ब लाऊंगा। ठीक। डेला को भी उसके माइंड में होता है कि मेरे पति की एक जो घड़ी है वो बिना चैन की ही पड़ी हुई है जो उनको बहुत एट अ ईयरली द बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो उनको मिला था एज अ गिफ्ट। वो बहुत सुंदर घड़ी थी। तो उसके लिए वो क्या करती है, सोचती है कि अगर वो चैन उसके लिए खरीद के ला देती है घड़ी के लिए तो वो हमेशा पहनेंगे और खुश रहेंगे, उनको अच्छा लगेगा इस क्रिसमस के मौके पर। तो क्या करती है, जाके अपने बालों को सैलून में बेच आती है। एकदम छोटे छोटे करा लेती है जो उसके लंबे लंबे बाल थे और अच्छे बाल थे। हाँ। तो जब वो एक्सचेंज करने को आते हैं एक दूसरे का गिफ्ट तो पाते हैं कि उनके पास घड़ी नहीं है जो उनके लिए चैन लाने गए थे, और इन जो घड़ी बेचकर उनके लिए कंघी लाए हैं उनके पास बाल ही नहीं है। तो ये अच्छा एक देखने को मिलता है। Summary: The Gift of Maggie is a touching story about love and sacrifice. Jim and Della are poor couples who want to give each other Christmas gift. Della sells her beautiful hair to buy a chain for Jim's watch, while Jim sells his watch to buy comb for Della's hair. When they exchange gifts, they realize that their gifts are now useless. However, their action shows their deep love for each other. The story teaches that the true love is more valuable than material things. In simple words, their sacrifice makes them wise like the Magi, who gives the meaningful gift with love and care. Key learnings: true love is ba- based on sacrifice. Material things are less important than the feelings. Selfless love is greatest gift. Understanding and care matters more than money. Real happiness comes from giving, not receiving. So the next chapter is At Work of Art. That is written by Anton Chekhov. Uh, यह यह कहानी एक आदमी सेसा सिमरो की है जो अपने डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए गिफ्ट देता है। वह गिफ्ट कलात्मक स्टेटस नग्न मूर्ति होता है जो थोड़ा अश्लील इनडिसेंट टाइप का होता है, बिना कपड़ों का। डॉक्टर उस गिफ्ट को देखकर असहज महसूस करता है क्योंकि वह उसे अपने घर नहीं रख सकता, इसलिए उसे किसी और को दे दिया। फिर वह गिफ्ट एक 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 करके कई लोगों के पास जाता है क्योंकि कोई भी उसे अपने पास रखना नहीं चाहता, और अंत में गिफ्ट फिर से पैसा के पास ही लौट आता है। यह कहानी दिखाती है कि समाज में लोग दिखावा, प्रिटेंस और हिपोक्रेसी करते हैं,
वे सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ों को ही मानते हैं। तो कहानी में होता क्या है, ये जो सिमरो सिमिरनोव सेसा सिमिरनोव एक लड़का होता है। तो क्या करता है कि उस वो जिस डॉक्टर के पास जाता है, अपने करीबी डॉक्टर के पास, एक दिन वो अपना अ, पूर्वजों की कह सकते हैं या उसके पिता के समय की एक मेटल कांसे की मूर्ति होती है, तो वो उसको ले जाकर